Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for Mdcat, and today I am going to discuss the last topic of our unit. So that is gut. So let's move on. Dear students, now the hormones of gut. So what is gut? You know, gut or alimentary canal or digestive system तो डियर स्टूडेंट्स हमारे गट से कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं. आपने फर्स्ट ईयर में भी इसको डिस्कस किया था. सो नंबर वन इज़ गैस्ट्रिन. So this is the hormone which is secreted. It is secreted from mucosa of pyloric region and secreted under the influence of partially digested proteins, especially in stomach. तो जब स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन हो जाती है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर उसके रिस्पॉन्स में सिक्रेट होता है पाइलोरिक रीजन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड और इसका फंक्शन क्या है? It stimulates the gastric glands to produce gastric juice. Produce gastric juice, especially pepsinogen and more HCl, ताकि वहाँ पर डाइजेशन हो सके. इज दैट क्लियर? तो सेक्रेशन कहाँ से हो रही है? फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ द पाइलोरिक रीजन. और सेक्रेट कैसे हो रहा है? किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स इन द स्टमक. और करता क्या है? इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. सो दैट इज द गैस्ट्रिन. क्लियर? इसी वजह से स्टमक को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है. क्लियर? और दूसरा हार्मोन इंपॉर्टेंट यहाँ पर, दैट इज सेक्रेटिन. So secretin, it is secreted from
ड्यूटेनल म्यूकोजा, फ्रॉम ड्यूटेनल म्यूकोजा। ये तो उसकी साइट ऑफ सिक्रेशन हो गई, ठीक है। कैसे? secreted under the influence of secreted under influence of एसिडिक काइम। जैसे ही एसिडिक काइम जो स्टमक से आएगा, एसिडिक काइम, as it touches or comes in contact, touches the duodenal mucosa, ये इसका इन्फ्लुएंस हो गया, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ secreted from and under influence of, और अब इसका फंक्शन, so it stimulates the pancreas एक्सोक्राइन पोर्शन, ठीक है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज टू सेक्रेट pancreatic juice and लिवर में किसको? गॉल ब्लैडर को। टू रिलीज बाइल, ताकि जो एक तो पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस आएगा वो उसके अंदर मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस, वो इस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और दूसरे नंबर पर जो बाइल है इसके अंदर मौजूद जो फैट्स होंगी उनको एमल्सिफाई कर दिया जाएगा ताकि जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो उसके ऊपर अच्छे से एक्ट कर सके। क्लियर? सो दीज टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। अच्छा, सेक्रेटिन के साथ साथ एक और हार्मोन है जो इसमें हेल्प कर रहा होता है सेम इसी काम को। द थर्ड वन इज कोलिसिस्टोकाइनिन। सिस्टोकाइनिन और CCK, इट इज ऑल्सो नोन एज CCK। तो डियर स्टूडेंट्स, ये CCK भी इट एक्ट्स टुगेदर with secretin to produce pancreatic juice and bile। तो ये दोनों मिलकर के ये एक काम कर रहे होते हैं। जैसे ही एसिडिक काइम पहुंचता है इनटू द डियोडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर इनकी डाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस होगी। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज द गोनेड्स। सो गोनेड्स जो हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर डिफरेंट यू नो वेरी वेल। फीमेल्स के अंदर जो गोनेड्स हैं दे आर द ओवरीज एंड द मेल्स दे हैव गॉट टेस्टिस। सो गोनेड्स से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या फंक्शन है,
सो लेट अस डिस्कस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बॉक्स। आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर यू सून। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।